Good morning students, welcome to Commerce Campus Odisha. Today we will start with the MCQ discussions of Indian contract and the lengthiest chapter obviously in total business law and communication. तो एथिरे तमे देखिबो बहुत repeated questions. The questions are getting repeated a lot and एथिरे major questions कोडा कोडा रो आसीबो, please note down. First आसीबो तमरो consideration aspect रो. Consideration aspect रो तमरो questions आसीबो. Consideration aspect रो questions आसीबो. Then agency consideration aspect रो questions आसीबो. agency aspect रो questions आसीबो. offer type रो questions आसीबो. माने एमती नै कि रिमेनिंग जगह आसीयोनी कहि कि आसीबो बट कोन हैला तो consideration agency आउ offer हैला. Then so देखो the first type of question is the person who makes the proposal is called. Very difficult question na. The person who makes the proposal he is proposer हैला. Then every promise and every set of promises forming consideration for each other is called. हाँ ना नहीं जदि ऑफर थांदा ले ऑफर जदि ऑप्शंस रे थांदा ले कहले ऑफर जदि माने ऑप्शंस भितर ऑफर एलिमेंट ता जदि थांदा ले कहले कोन कहि थांदा हैला. प्रॉमिस नहीं तमे एग्रीमेंट ठीक आका बुझी जाओ. मु कहले जदि ऑफर थांदा ले कहले ऑफर कहि दे थांदो कि नहीं. व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर माने कोन? ऑफर माने ऑफर एक्चुअली माने पर्टिकुलर जिंस करिबा पई किमा न करिया पई से जिंस पई कोन से जिंस पे ऑफर नाही रे ऑफर कहि देले ऑफर कहछि पर्टिकुलर जिंस करिया पई किमा न करिया पई से किछि जति किछि जिंस डिमांड करछि आ ता रिटर्न रे किछि सर्विस किमा कोन ले गोटे जिंस प्रोवाइड करछि तो all those things will come under the purview of an offer हैला. is called an agreement. तापरे an agreement enforceable by law is called contract. agreement enforceable by law. enforceable माने कोन? approved or recognized by law. enforceable माने कोन? approved or recognized by law हैला. approved or recognized by law. तापरे an agreement which becomes enforceable at the option of one or more parties is called voidable contract. agreement which becomes enforceable at option of one or more parties. बुझी पालो ना नहीं बुझिलानी कौन बुझिलानी क्वेश्चन बुझिलानी सुनी ना. ओके फाइन माने से कहूँ जड़े एनफोर्सेबल करि पारिबो चाहेले माने आ जणे कोन करिवो एनफोर्सेबल करिवोनी. बुझी गला ना नहीं से टिके कंफ्यूज करिके दोछि क्वेश्चन टा. तो जदि जणे एनफोर्स करिया को इच्छा रखिछि आ जणे कोन एनफोर्स करिया तार जमा इंटरेस्ट ना इट इज voidable माने वन ऑफ द पार्टीज कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट और टर्न द कॉन्ट्रैक्ट void. ओके फाइन सॉरी पेन दिथर हे वाला हैट्रिक ना हो. तो voidable contract माने कोन? contract which can be made void by one of the party हैला. गुटे पार्टी चाहिले सेडा कोन कर परियो कैंसिल कर परियो किबा void कर परियो. इट इज voidable contract. सीधा सीधा न कहि कि बुल्ले कि पचारछ. ओके examination questions na India ka rahiyo. The Indian Contract Act 1872 extends to dash whole of India except
जम्मू एंड कश्मीर ठीक अच्छी होल ऑफ इंडिया को अप्लाई हो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर द एक्ट विच डील्स विथ कॉन्ट्रैक्ट्स इज टाइटल्ड तुमको कंफ्यूज करिया को एमती क्वेश्चन से दोच द एक्ट विच डील्स विथ कॉन्ट्रैक्ट्स इज कॉल्ड is titled Indian Contract Act 1800 बुझी पालो then an agreement not enforceable by law माने कौन लॉ कौन करनी recognize किंबा support करनी किंबा approve करनी तो it is a void contract बुझी पालो ना नहीं void माने कौन रे actually it does not have any effect बुझी पालो ना then a proposal is complete when केबे कंप्लीट हो गोटे प्रपोजल माने कौन ऑफर केबे कंप्लीट हो किंबा ऑफर केबे हमें वैलिड अच्छे ले कहि परिबा इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड एंड ऑफर रो भी हमर कोन टू टाइप्स थिला ऑफर केबे वैलिडली कहबा फ्रॉम द प्रपोजर पर्सपेक्टिव ना जेतोळ से बहुत भल से बुझे देछि आ तरफ रु केबे ये जेबे बहुत भल से बुझीची तो कंप्लीटली गुटे ऑफर टा केबे कंप्लीट हैला ले हमें कहि परिया जेतोळ को जो पर्सन को सी ऑफर दोची ही हैज कंप्लीट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफर व्हिच इज मेड टू हिम जेतोळ ताको इंफॉर्मेशन पहुंचला देन वी कैन से दैट द प्रपोजल इज कंप्लीट बुझी पालो देन acceptance must be absolute and unqualified acceptance माने कौन you are actually accepting the offer which has been provided to you एथरे दीडा एलिमेंट से कहला कौन गुटे कहला कौन absolute माने कौन certain and without any confusion certain and without any confusion unqualified माने कौन without any complaints or without any remarks माने एडा एमती हेथिले मु कर देई थांदी एडा एमती हेले मु करबी से टाइप रो जिंस को हमें एक्सेप्टेंस टा कंप्लीटेड हाली कहि परियानी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हेबा पई से दीडा जिंस कहला कोन गुटे होची एब्सोल्यूट एंड सेकंड थिंग इज अनक्वालिफाइड बुझिला अ काउंटर ऑफर इज काउंटर ऑफर माने कोन रिवर्स ऑफर when one person is offering something and the other person instead of plainly accepting he is giving some simultaneous offer to the original offerer बुझलो ना नहीं प्रपोजर को जेतोळ को से उल्टा किछि ऑफर दोछि that is a counter offer बुझलो तो counter offer is a proposal which modifies the terms of original offer बुझि पालो ना नहीं एबे तुम इंडिविजुअली आंसर एबे देखि दोछ सेडा अलगा कथा मु एक्सप्लेन कर दोछि बट देखिला लगो कोन पे से जगह हबनी सेडा मध्ये तुम भाबिया पड़िबो द रीजन व्हाई आई एम गिविंग सम टाइम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज दैट तो एडे से कोन कहूची प्रपोजल व्हिच मॉडिफाइज माने कोन चेंजेस ऐड करबो किबा चेंजेस रिमूव करबो इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर माने ओरिजिनल ऑफर रो टर्म्स को कंडीशंस को एलिमेंट्स को जहां भी जदी किसी से मॉडिफिकेशंस ऐड करूची then that is a counter offer hella a contract is defined in section 2h as contract ro definition kon kochi an agreement enforceable by law agreement ko jetol ko enforceability add hochi then it is said to be a contract the contract is defined as an agreement enforceable by law tapare an invitation to treat is dash treat an invitation to treat तो ए भितर कोडा सेडा पे से सेडा देछ बुझले नहीं कोन पे हैला मते को फर्स्ट रे कंसीडरेशन तो ना एडा किछि भी नहीं डायरेक्टली से लिखि छी इनविटेशन वैलिड ऑफर कोई तमे किन जानिबो काहेंगी द अदर पार्टी रो जिंसडा से देइनी तो दैट्स व्हाई एडा हबो मु काली कहिथिली एमसीक्यू क्वेश्चंस रे किछि किछि क्वेश्चंस इमिति अछि जोडा कि खाली इलेक्टिव मेथड रे आगा तमे जानि परियो आंसर कोडा नॉर्मली जितल तमे देखुचो एन इनविटेशन टू ट्रीट इज अ वैलिड ऑफर लागियो तमको काहेंगी से गुडा ऑफर देला लोक आसीबे बट एडी कोन पे सेडा हबोनी तमे जान लागा राइट आंसर को अराइव करि परिबो
मु जिंदे कहली वैलिड ऑफर माने कौन रे जेतेबेल को से पर्सन रो नॉलेज को सेडा गला एंड दिस पर्सन हैज गिवन अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट इट तो एक कोनसी भी जिंस हम क्वेश्चन रे से देनी तमे कंसीडर करि परिया कि एडा वैलिड ऑफर अली कहिगी नाही तो दैट्स व्हाई कोन हला हमर इनविटेशन जेहेतु देछि तो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर बुझिला examination questions are at this level so unless and until you practice these questions you cannot attempt anything काहे कंफ्यूज हे जिवो ना जेबे जे देखि न गुड थरे भी केंदी बुझिबो तो मते कोई क्वेश्चन टा बुझिला ना नहीं बुझिला टोटली ओके which of the following is not essential for a valid offer एटा टिके देखो not essential for a valid offer what is a valid offer again मु कहिथिली ऑफर रो क्वेश्चंस बारंबार पचारची तो वैलिड ऑफर रो मीनिंग कोन ऑफरर क्लियरली कहिथिबो ऑफरी क्लियरली बुझिथिबो ऑफरी को पूरा सब जिंस रे इंफॉर्मेशन पाई जाइथिबो इट इज अ कंप्लीटली वैलिड ऑफर तो ऑफर टा के रजिस्ट्रेशन हबो गिरे कोडा रजिस्ट्रेशन हबो ठीक कहूच को कोडा रजिस्ट्रेशन हबो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन हबो काहेंगी एनफोर्सेबिलिटी आसियर माने कोन रजिस्टर करिबार लॉ अंडर रे तो ऑफर को रजिस्टर करि परिया कि हमें ऑफर हबो एक्सेप्टेंस हबो ताकू लॉफुल इंटेंट आसीबो हमर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आसीबो से सब जिंस कंप्लाई हला पर आगा कोन कोइ परिया हमें कि इट इज अ वैलिड ऑफर कहिगी बुझिला ना नहीं इंटेंट टू बी बाउंड माने जतळ को ऑफर कर देछि सिए हला ये जहां भी बुझिला तो ये जो कथा ताको कहिछि ये से कथा रे रहियो पड़िबो ना बुझिला ना बे आमे ताको कहिलु सी एक्सेप्ट करला पर ता ऊपर गुटे आसीबो कि बाध्य तू सेडा करिया पयले बट जो लोक ऑफर दोछ माने प्रॉमिसर जी अछि सी तो ता कथा रे रहियो पड़ियो ना दैट इज इंटेंट टू बी बाउंड बुझिला नि गिरे बुझिला ना हां किछि डाउट्स मोस्ट प्रोबेबली तुमको एई क्वेश्चंस पचार देबो किमा इमितियार क्वेश्चंस जगह पचारियो the effect of the death of proposer if acceptance has not been communicated the effect of death of a proposer the effect of death of proposer ऑफर केमिति केमिति माने आगु को केमिति जीवो बुझिला ना आमु गोटे थिला ना द पार्टीज मस्ट बी सर्टेन दे मस्ट हैव लीगल इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप तो एडी कोन हबो ऑफर लैप्स होची माने जदी प्रपोजर डेथ हे होची माने द पर्सन हु हैज मेड द ऑफर इज नॉट देयर तो कोन सब्जेक्ट मैटर भी डिस्ट्रॉय हे होला पर्सन भी नाही तो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली जा जा भीतर हेची से लोक ना नाहांती टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज द फर्स्ट कंडीशन हमर हां ना नहीं तो ऑफर कोन हबो लैप्स हे जिवो लैप्स माने कोन क्लोज हे जिवो ऑटोमेटिकली क्लोज और कैंसिल हे जिवो the general rule is that acceptance must be communicated हला एटा ट्रू फॉल्स दोची केतळो दोची पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स तापर नन ऑफ द अबव ऑप्शंस दोची जोडा कि फालतू से ऑप्शन देले जा ना देले ताहा so I don't give all these things then an offer made to the whole world is called an offer made to whole world बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है जगह टिके देखो an offer made to the whole world bilateral कौन पेना एडा मते कहलो एडा टिके भाबी चिंदी को दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स हला यूनिलैटरल कौन पे हला एडा इनविटेशन टू ट्रेड तो नहीं एडा छाड़ो इनविटेशन टू ट्रेड ना इनवैलिड नहीं से दिडा जिंस कौन पे ने तुम भी बुझलो हाँ एक्सेप्ट करि परिया तो दैट शुड बी अ जनरल ऑफर यूनिलैटरल ऑफर माने कोन ओनली वन पार्टी विल बी इन द डोमिनेटिंग पोजीशन माने से जहां भी कहबो सेडा हबो बुझि पालो तो एडी देखो जतलो गुटे ऑफर टा पूरा वर्ल्ड को हेछि रे
पूरा वर्ल्ड को हेइचे कहले से माने कोन काउंटर एमान सहित कथा ही पारिएगी पूरा वर्ल्ड को जो जिनसटा हेची जो पर्सन माने प्रपोज करची जो पर्सन ऑफर देची से कोन ईच एंड एवरी पर्सन कथार्थ एड्रेस करि पारियोगी ऑब्वियसली नहीं बुझिले ना नहीं दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिलैटरल ऑफर बुझिले नहीं अरे बायलैटरल माने कोन दि जण पार्टीज भितरे यूनिलैटरल माने एडी से कहूची पूरा वर्ल्ड को गुटे ऑफर देची कहिगिर जे एक्सेप्ट करला करला न हले नाही बट ईच एंड एवरी पर्सन सहित ए पर्सन कथा ही पारि पूरा वर्ल्ड हे पारियोगी इज इट फिजिबल so that's why it is unilateral contract unilateral offer बुझिला हबो से जा थिले जदि जनरल ऑफर थांदा तो सेडा ही थांदा ऑप्शन देनी ना सेडा जनरल ऑफर डेफिनेशन आगा सेडा एंड एमती भी गोटे क्वेश्चन आसी कोन जनरल ऑफर इज अ टाइप ऑफ डैश ऑफर बुझिला सेडा मध्ये लिखि पारियो so it is unilateral. The Indian Contract Act came into force on 1st July 1872 1st July 1872 तापरे Section 2H of the Indian Contract Act defines इम्तियार क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आसे तो तमरो जहा भी एडी अछि प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन ए जार सेक्शन नंबर जा लिखि देले बेटर मु कहिथिली गुड जागर लिखि मध्ये देइथिबी हला तो कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन अंडर आछि सेक्शन 2 सबसेक्शन H an agreement not enforceable by law is called void agreement consideration must move at the desire of consideration must move at the desire of बहुत बेसिक क्वेश्चन ना कि मैं कंफ्यूज हो जा देखो ठीक है प्रॉमिसर कौन पे हला नो व्हाई नॉट प्रॉमिसी थर्ड पार्टी तो नहीं कोर्ट तो नहीं तमे जानचो कौन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मन नहीं की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाडा तो मन थियो नाम तो सुना होगा consideration must move at the desire of the promiser promiser is a person who is making an offer to do something or to not do something तो से पर्टिकुलर लोक को कौन दबो एक्सेप्टेंस दबो माने से जिंस करिवो कि न करिवो आ जे जिंस करला माने से सर्विस जे प्रोवाइड करला से कोन पैसा दबो कि ना ताको हम पैसा दबा तो के पैसा दबो एडी प्रॉमिसर दबो प्रॉमिस ही दबो रे प्रॉमिसर प्रॉमिस के भूली जो ए कहला बी को कि प्लीज प्रोवाइड इंटरनल माने जहाँ भी इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज मते प्रोवाइड बी एक्सेप्ट करला कौन करला एक्सेप्ट करला तो बी ए को सर्विस प्रोवाइड करियो ना ए बी को सर्विस प्रोवाइड करियो बी ए को सर्विस प्रोवाइड करियो आ सर्विस प्रोवाइड करली तो टे चांदा नहीं जा खुशी रे पार्टी करेले बी पैसा दबो कि ए को ए दबो तो एडी प्रॉमिसर किए प्रॉमिसी किए आ कौन कंफ्यूजन हैला एबे बुझिले ना बे डाउट अछि आज्ञा डिजायरली कौन पेला इच्छा रे बुझिले ना नहीं रे इच्छा रे माने से लोक जहा भी गरिबो अरे कंसीडरेशन रो वैलिड कंसीडरेशन रो हमरो रूल्स थिला ना नहीं सेडा कोन जोर जबरदस्ती करी कि नहीं पारिबोनी इट शुड नॉट बी माने एमति नहीं कि एडेक्वेटली से दबो आले किछ नहीं मॉनिटरी हे परियो नॉन मॉनिटरी हे परियो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट टाइप ऑफ कंसीडरेशन हे परियो इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर लेखा हिची ना नहीं माने जे पैसा दउची ता निजो इच्छा रे दबो जोर जबरदस्ती रे नहीं दैट इज रिटन हियर डिजायर ऑफ हला एबे क्लियर देन all agreements are contracts if they are made by free consent of all parties competent to contract is stated in section 10 कौन थिला
हाँ ओपन बुक देखी को एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 कौन थिला 10 एलिमेंट्स अच्छी सेक्शन नंबर 10 कही थी मो मन रखिया पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आछि कोन हमर सेक्शन नंबर 10 रे हला मु कही थी ना किछि किछि इंपोर्टेंट सेक्शन अछि जोडा मन रखियो पड़ियो पीयूष पचार क्लास हबनी कि मु जाननी से पीयूष नहीं हमर कौन लिंक तो दिया है नहीं सर मना कर which of the following persons is not competent to contract not competent माने not eligible to enter into a contract के एजा कौन पे हबन रे अनसाउंड पर्सन कौन पे हबनी हैला वेरी गुड तो ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल जेतु जेतु कहि छि सी लूसिड इंटरवल माने कोन तार मेंटल कंडीशन ता स्टेबल थो वेरी गुड कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन सब थिला चारटा थिला कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक पांचटा थिला मन अछि ना नहीं तो मिस्टेक रे कोन टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक यूनिलैटरल मिस्टेक बायलैटरल मिस्टेक तापर बायलैटरल रे कोन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ लॉ रे कोन इंडियन लॉ फॉरेन लॉ हाँ सुनला लागु थी कहि थी जे के बेड तो कहि छ आ माइनस एग्रीमेंट इज एडा एबे रिसेंट अटेम्प्ट आस्थिला लोकाने वॉइड एबल लिखि के आछचंदी enforceable after attaining majority लिखि आछचंदी void ab initio हला clear starting रो आगा void a contract which ceases to be enforceable by law ceases to be माने stops to be valid becomes okay an offer can be revoked माने कोन cancelled hela can be cancelled or revoked before acceptance the communication of acceptance is complete as against the proposer communication of acceptance is complete as against the proposer माने proposer perspective रो acceptance रे केबे complete हला A person who finds belonging to other and takes them into his custody is known as others रो belongings माने अलगा लोकानगर सामान आको मिलेला और ये कौन करला ता पाखरे से जिंस रखिला तो आको हमें कौन कहबा फाइंडर ऑफ गुड्स और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हला एडा दीडा जा जिंस अछि फाइंडर ऑफ गुड्स और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स नाही मिले बने सतरे किछ नाही सेडा को जागर लिखा है सेडा जनरल क्वेश्चन ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर आगा पचाच हैला बेलर बेली देई छी ना तो कंफ्यूज करे पे हु इज अ बेलर के रे हम जान प्लीज हम कोनी वी डोंट नो हिम वी डोंट इवन हैव हिज इंस्टाग्राम आईडी Bailey is the person to whom goods are delivered. Bailer is the one who keeps the possession of the goods and modifies it and gives to the bailee or just directly gives it to him. Depends. Reja. Store करिवो न करिवो deliver तो करियर करियो पीयूष मैसेज देखी नहीं मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मींस ए देखो मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माने कोन सेडा हबनी सेत पे हाइलाइट करछ मिसरिप्रेजेंटेशन माने फॉल्स स्टेटमेंट तो करथिबो एडा होची मेन पॉइंट made innocently believing it to be true. Man, the other three elements are there. Gute hochi false statement. Second thing कौन
The other person does not know the information. Number 3 is he has also believed that the information is true. बुझरा ना नहीं innocently. अब एटा कौन deliberate intention to deceive the other party is कौन रेडा deliberate intention to deceive the other party is known as coercion. चापड़ा मारी coercion माने कौन जोर जबरदस्ती करियार हैला forcing the other party to enter into a contract or forcing the other party to accept certain information. Forcing forceability factor टा आसीबो हैला concealment of facts with intention to cheat कौन डेडा fraud डर छ कौन कहियो तमे fraud करछ ना कौन misrepresentation तो एडा मिसरिप्रेजेंटेशन माने जो रिप्रेजेंटेशन एबे जे बाहाई नथियो हैला जदि बाहाई दियो से रिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन की दबो मिसेस रिप्रेजेंटेशन होबो तो इग्नोर दिस यूट्यूब रे स्किप बाळले इग्नोर करो से पिलान तो दीटा जहा टिके बुझचंतु तांको अधियो पचाले सेडाल भूल जे से मन कोन डाला नहीं that is not misrepresentation. Misrepresentation under Indian Contract Act is the other person also does not know that the fact is false. से जहाँ भी सुने पूरा सब विश्वास कर दो आको पूरा सब ठकी देथि ये जाई निज लोकन कहि देला ये भी जाननी कि से जिनसडा भूल कहि गिरी हला हम रियल लाइफ रे बहुत हेबो ए जिनस हला चुप रहि जा an agreement is void if both parties are under a mistake as to एटा बहुत सारे क्वेश्चन आछी एग्जाम रे एडा रे ए से जो इंपोर्टेंट पोर्शन रे एडा मध्ये लिखि दियो मिस्टेक गोटे फ्रॉड गोटे से दिडा जिंस रे बेस क्वेश्चन पचाच मिस्टेक एंड फ्रॉड हैला the agreement is void if both the parties under a mistake as to matter of fact essential to the agreement माने एग्रीमेंट रो जो सब्जेक्ट मैटर टाइप रो किबा एग्रीमेंट को मोस्ट एसेंशियल जो जिंस हेथिबो से जिंस को धरि जदी दिजन जर कोन भूल धारणा अछि तो ऑटोमेटिकली द एग्रीमेंट इज void बुझि पालो देन consideration must move at the desire of a promiser past consideration is एडा मो हाइलाइट करनी को आंसर टा past consideration is कोडा डी फॉर धनु एडा ओपन बुक नहीं एडा हिंदी को एमती जहा लागिला को डी तू कह बी हबो तो डी कोइल पुरे बी परमेश्वरी रे ए कोइ दोनु ए आयुष तू कौन कहू बी ना डी बी कहू तू डी कहू तू डी कहू धनु जोड़ा केएल कोइ नथे सेडा तू कहू नहीं कहिया जाओ तू कहूनु को ऑप्शनल लागुनी कि हबो मा मेन्यू कार्ड ना कोन को ऑप्शनल लागुनी तते मैं पचली कोन खाऊ जल्दी कह जल्दी हेडी मो एजा सब आंसर दे चले न सब सिंधिया लाइथन कोडाल नहीं दीडा जिंस हे परियो इधर सब जाल लागियो नले कोडाल नहीं लागियो कौन कह जल्दी करे कोड करे मु तो चप्पल पिन देज पड़े एबे
not in the options. D. हाँ तू B कहलु ना तू D कहलु आंसर इज D कहीं हाँ किंदी तो फर्स्ट रे कौन भाभी कहलु मते कह कौन तो भाभी थियो ना तू रही था टिके ना जमर पीयूष आउ सुजल अलिया जदि जिनस फर्स्ट रे आगे जदि आंसर पळाइला से मानु निज ऊपर विश्वास नहीं से माने कहले अरे रे फर्स्ट रे हम एते सहज रे आंसर पळाइले एडा नहीं कहि दि जन जा काट देले राइट आंसर टा काटिकरी रॉन्ग आंसर करी दै छथि विश्वास होजी सेडा कोन बेहला क पास्ट कंसीडरेशन गोटे इमिति जिंस जोडा कि कोन वैलिड हेइथिबो कि नाही से माने से लोकाने कथार्थ रागा जानि परिबे आगरे गोटे जिंस जदि हेइची कि गोटे जिनस माने जहाँ भी सर्विस की ता इक्विवेलेंटली मनी आगुड़ दे देची तार गोटे रिटर्न प्रूफ थिबा दरकार से जिनस थिले कोन कहले कोन कोन सिंधी को हबनी एडा म अज्यूम करियो पड़ियो से जा सब लेखा हबनी बुक रे हैला माने पास्ट कंसीडरेशन रो मीनिंग तमे म को केन भाबियो टिके सुनना पास्ट कंसीडरेशन माने कोन which has been given in past केबे गुडे देइचोनी तो तार किछ तो गुडे हिसाब थियो किछ गुडे लेखा हिथिबो जदी लेखा हेइनी हमु गुडे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हेबा पई 10 टा एलिमेंट अछि हां ना नहीं टू पार्टीज कंसेंट मस्ट बी फ्री सेम थिंग इन द सेम सेंस लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो एजा सब कोन रिटन कॉन्ट्रैक्ट हबो ना रजिस्टर हबो ना नहीं और रजिस्टर हेला अलगो से कंसीडरेशन रे कोन देखेबो कौन देखे कौन मत से बर दबली कहीकि देखे कि दे कहीकि जो देखार अच्छे कहले ये कह दब जे लोक मैंने बाध्य देवाई सी लोक तो कह मुझे कहीकि ए लोक से एग्री कर कि जाने आम रिटर्न प्रूफ दरकार जदि एमती रिटर्न प्रूफ नहीं तो फ्यूचर रे कौन हम जान से कह मु कहीं तो मुझे कौन थी मो मुंड कौन थी से मत डर देला मु पीकरी थी मत मु रात पी सका मत होश नहीं मुझे हाँ कहीदेली जहाँ भी कह और रिटर्न थिल तो से किछ कोइ परियो ना एबे बुझला एते जिंस भाबियो पड़छ हैला adequacy of consideration माने consideration should be adequate or not माने ताको जत्ते माने sufficiently से दबर अछि रे देखनो consideration रो रूल्स काढो देखो हाँ sufficient नहीं adequate नहीं तो is not necessary consideration must be lawful एली से कहिछि बाकी adequate sufficiently से दबर चली गई ये कहनी हैला a contract made by a person of unsound mind is void contract with minor is void ना void ab initio जदि void ab initio देइने तो void हैला और जदि void ab initio देइछि तो को ऑप्शन हबो void ab initio हबो हैला बुझिला हसचो बहुत बुझिलेनी ओ ग्रेट कौन कहले है माइनर टब अरे अनसाउंड माइंड तो एंटर करि परियोनी कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एग्रीमेंट का हबनी अरे अनसाउंड माइंड जो लेखा होची सेडा काओ लेखा हो जानछ ना कॉन्ट्रैक्ट भीतर एंटर हैला पर जतळो से अनसाउंड माइंड हो से डिस्क्वालीफाई होची कॉन्ट्रैक्ट रो बुझिला ना नहीं से लोक जानथियो रे ना ता जातो रे लिखि देथियो कि ये बाया इजिली ना एस्ट्रोटॉक कहि देथियो ता बुझिलु ना माने वंस हैला पर जतळो को ता मुंड खराब हैला कि से पागल हे होला देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट हैला पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है A contract entered under misrepresentation is voidable at the option of the misled party. बुझी पालो ना नहीं voidable जदि misrepresentation रे enter हेइ चंदी हमें कौन देखिलो misrepresentation fraud mistake ए जारे कौन most of the cases रे जने पार्टी जतळो जान दे लगी ये कौन भूल रे ये कर देछि कहि कि से कौन करिवो ऑटोमेटिकली void कर देबो बुझिला ना नहीं
If consent is obtained by coercion, contract is coerced party. Coerced party माने कौन जा ऊपर जोर जबरदस्ती लगे माने coerced party माने forced party कोई परिया. If both the parties make a mistake as to matter of fact, agreement is matter of fact माने कौन subject matter किमा most important जिनस को धरी जति दि जन जार भूल धारणा अछि तो कौन void हबो. If one party makes a mistake as to matter of fact, agreement is not voidable. कौन 38 डा ना 38 डा 38 टा कौन हबो voidable कौन पे हबो. अरे देखो दिजन जाक पार्टी गोटे जिनस को धरिकी टोटली मिस्टेक रे अछंदी माने मनर गोटे कंट्री लॉ से माने जान नांदी बट से कंट्री को दिजन जाइचंदी इंडिया रो दिजन जाक गोटे कंट्री रो फैक्ट माने फैक्ट को किछि भी जान नांदी भूल बुझिचंदी तो से कंट्रैक्ट आगडू कैंसिल हे जिवो ना आउथरे काटी के लिखिबो नाही टोटली माने अलगा अलगा जहा भी बुझिचंदी बट जदि गोटे पार्टी जे अछि से पूरा ठीक से इंफॉर्मेशन रखछि आउडे पार्टी को बुझी पारलानी से भूल भाबेछि कि भूल बुझिछि तो कौन हम कंट्रैक्ट कैंसिल कहेंगे हम सी आता बुझे देले तो मिस्टेक कवर अप हो वॉइड करियोगी सी नहीं तो वन पार्टी हेले नॉट वॉइडेबल बोथ पार्टी से कहले कौन वॉइड बुझिले एबे. A contract made by a person who when intoxicated is voidable if the other party has a reason to believe intoxication. Contract made by a person when intoxicated माने कौन मधुआ he is under intoxication or he is under unconscious state कोई परियो ड्रिंकिंग स्टेट कोई परियो तर नॉर्मल माइंड रे से नहीं पी देची तो इज voidable if the other party has reason to believe intoxication माने ता पाखरे जदी प्रूफ अछि कि सतरे पीची पीगरे कथा होची तो देन से कोन कर परियो चाहिले void करि परिबो. Unsound mind is different. This is difference. Lucid interval से सब अलगा एडी कौन जदि से कहूँ कि नाइ मु पी दे कर दे मते से जिनस दरकार नहीं प्लीज मते छाड़ दियो तो अदर पार्टी चाहिए सेटा वॉइड केबे करि परिबो जेतोला ता पाखरे प्रूफ अछि कि कौन ये सतरे पी देछि कहि हैला. देन contracts entered into by alien enemies. Contracts entered into by alien enemies are void. An agreement whose object is unlawful is void. An agreement in restraint of marriage. Restraint माने prohibition. कौन धनु हसछु क्यों कर दे ना कौन एग्रीमेंट restraint of marriage रे किए करले कहि दे void हले मैम कहि चंदी void आ इंदे हबनी मो इच्छा मो बाहागर मो इच्छा हले क ले रिस्ट्रेन करियर चल तो हाड़ गोड़ भांगी दे एग्रीमेंट के करछि हाँ ना नहीं को फैक्ट कथा को अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वेजर माने कौन गैम्बलिंग गैम्बलिंग एग्रीमेंट्स या कौन वैलिड की void के कहीं सपोर्ट करियो गैम्बलिंग को. सेक्शन 23 डील्स विथ कंट्रैक्ट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हैला एग्जाम में गुड थोड़ी पचारथिला मु इंक्लूड कर देली. An agreement to do an impossible act. कहेंगी certainty is the major factor. The object should be certain. थिला ना नहीं valid essential elements रे. A contract entered into in contravention of law. Contraventional law कहले law को opposite. बेले गुट लोको गयो कौन कि मु तते हैरान करली मु तोर कौन लॉस हेलाळिया करली खुशी रे अछि मते तो पार्टी दे किमा मते तो सपोर्ट करे कौन करियो से कार करी कैब रे पठियोगी होटल को ना बर्थडे ताको से कॉन्ट्रैक्ट पिनी करिवो लॉ पाखु को जाईगिरी कंट्रावेंशन ऑफ लॉ रे हैला. कंट्रावेंशन ऑफ लॉ माने कौन इज एक्चुअली कंट्रावेनिंग और डूइंग समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ तो एडा कौन हैला void बुझिले ना नहीं. तापरे a void contract is one which ceases to be enforceable by law. True na false? True. Voidable contract is one enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of others. So obviously there are only two parties to the contract and no third party can enter into a contract.
A third party can only be a beneficiary of a particular contract, but he cannot form a part of the contract. Co doctrine एडा doctrine of privity of contract. भूल जाओ सब भूल जाओ कौन पे मो घुसी मो एग्जाम देबी. Agreements in restraint of trade. Agreements in restraint of trade, restraint of marriage, restraint of public policy सब जगह कौन हमरो void. A contract the formation of which is illegal. This is something related to the prohibition of or the एबे जो हमें पढ़ लो contravention of law है ना. Performance of a contract means doing what is promised. तापरे contract may be discharged by discharge of contract रो केते types अछि केते types performance रे केते types actual breach रे केते types actual breach and anticipatory breach. What is actual breach? Actual breach is at the time of contract माने at the time of execution of the contract one of the party cancels a particular activity. But anticipatory breach माने कोन contract actually happen हेबा आगरे से कोन करियो call किमा किछि गुटे means रे से बुझेबो कि I'll not be able to execute this particular contract हैला कोन मन नै किछि भी मन नै. Okay, performance, breach, impossibility or operation of law. Impossibility of contract रे कोन होतिला ना the particular contract has become impossible to be performed माने subject matter destruction, one of the party has died or one of the party has become unsound mind, anything. Then operation of law माने contract was between two such countries, one of the country has become prohibited under law now. For example, we are doing some contract or we are doing some business with the Pakistanis. तो सेथरे कोन complete prohibition हेला. So due to the operation of law now the contract has become impossible to be performed. बुझिला. Then section 56 deals with impossibility of performance or impossibility of frustration. नाडा से अलगा अलगा करिके देछि. Then on breach of contract the aggrieved party में aggrieved party माने कोन party which has suffered से कोन कर परियो contract cancel करि परिबो किमा claim damages or penalty कोड आले भी करि परियो. Clear? Section 73 deals with कोन compensation for loss or damage caused by breach. A contract is discharged by novation. कौन थिला novation, alteration, rescission कौन थिला रे मो कौन से होटल रे से कौन अच्छी आइटम कहला आलिया कहि दोची तमने मेन्यू कार्ड आलिया देखुछ किछि ऑर्डर दोनो किछि नै भात डाली घांटा तरकारी संतुळा आंबळ आरी ओपन बुक एथरे ले अरे novation, alteration, rescission. Novation रे कौन होतिला party substitute a new contract for the old one. Party substitute a new contract for the old one. माने जहाँ जहाँ भी elements थिला किछि किछि elements replace करे पे ताके कौन करले से contract जगह रे गोटे नुआ contract टा enter कर दे चंदी. That is novation. ए देखो एडी rescission माने कौन cancellation of a contract and restoring the parties to original position. माने तांकानु गोटे जिंस दिया आइतला गोटे रेस्पोंसिबिलिटी दिया आइतला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हेला तो जार जागा ता घर पड़े. Alteration is a form of discharge of contract. Alteration is a form of discharge of contract. से जा सब तुमको अलग रे पढ़ी के लिखियो पड़ियो एबे टिके ध्यान दियो एडी हैला कोन कहले मिलनी तम मन तो नहीं छाड़ मूल रो और मिलनी मटेरियल रे मिलनी. Merger means dash. Please देखो ठीक है. Old contract ceases as it merges into a new agreement. Merger माने कौन रे? Two things have become a
one agreement. If subject matter of a contract is destroyed without the fault of either party, contract becomes subject matter जदि destroy हेयला without the fault of either party, contract becomes void. A contract of indemnity is governed by sections 124 to 125. A contract of guarantee is governed by section 126 to 147. Continuing guarantee माने कौन थिला मन अछि केते पिक्चर करचंदी मैम नहीं हाँ माने सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जदि किछि गारंटी प्रोवाइड करछि दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी तो एडी कोन सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एन एजेंट इज द वन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विथ हिज कंसेंट से प्रिंसिपल पे कोन करिवो काम करिवो termination of agency by death of principal is covered under section 201 bailment is covered under sections 148 to 181 pledge is a special kind of it is a very important question and repeated question आज्ञा केबे केबे पचारछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे पचारछ गेस मारी के लेखिया कथा सब जा तो घुसी पारियोनी जहा जहा मोस्ट इंपोर्टेंट मु देछि आ बाकी pledge is a special kind of bailment माने कोन पर्टिकुलर पर्सन ता पाखरे गुड्स रखियो कहियो किबा आ जन को डिलीवर करियो कहियो एदर ओरिजिनल फॉर्म रे किबा किछि गुटे मॉडिफिकेशन ऐड करी तो प्लेज रे कोन होची से गुड्स रखुची पैसा देबा जाय दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ bailment in a contract of guarantee the surety's liability is in a contract of guarantee the surety's liability is एजा सब बहुत इंपोर्टेंट फैन टिके बंद कर दो in a contract of guarantee the surety's liability is surety माने के मन अछि contract of guarantee रे केतरा पार्टीज थिले प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर surety तो प्रिंसिपल डेटर माने के जे उधार देछि ना नेछि देछि हां पक्का डेटर माने जे देछि देछि अच्छा कोन अच्छा ओके बैलेंस शीट फाइन ठीक अछि मते गुड जिंस को बैलेंस शीट रे एडा लायबिलिटी एडा एसेट ना एसेट टाइप एपट पड़छि रे मु जाननी बहुत दिन हैला पाठ पढ़नी तो एडी तो एडी कोन क्रेडिटर आछि ना डेटर आछि लायबिलिटी साइड रे क्रेडिटर आछि माने क्रेडिटर आमो देथियो ना हम क्रेडिटर को देथिया पैसा आमो देथियो हां तो एडी के देथियो पैसा हां आ प्रिंसिपल डेटर के जे देथियो ना नेथियो पैसा नेथियो अबे कहथिलो देथियो हली डरे देला ना कोन से भितर तमु ए कोन रे मु नहीं चली कइथु ना देखि दी मैटर इजियो डरे देछ ना कोन तमनु the principal debtor is the person who has received the loan बुझिला जदि मन पड़नी गोटे जिनस आगे देखिबो ए बी सी डी रे सी फर्स्ट आछि डी सेकंड आछि ओके तो लायबिलिटीज एसेट्स तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स अछि एसेट साइड डेटर्स अछि मु केमदी मन रखुथिली मु कहूछ इन माय 12th स्टैंडर्ड बेसिक लेवल तो क्रेडिटर्स डेटर्स तो लायबिलिटी साइड जदि आमे क्रेडिटर्स रखुछु तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु हैव गिवन मनी टू अस तो ए जिनसडा मन रखिबो कंफ्यूजन हबन हैला हुए प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर रे कंफ्यूजन हुए तो प्रिंसिपल डेटर हुए ही इज द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द लोन श्योरिटी माने के बिहाफ रे जी कोन करछि गारंटी प्रोवाइड करछि माने मिडिल पर्सन हैला तो को एक्सटेंसिव माने कोन माने प्रिंसिपल डेटर जदी पैसा से क्लियर कर दोछि श्योरिटी भी रिलीज हे जिवो जदी पैसा ये बोडे दोछि ये भी फसी जिवो जदी पैसा से आधा देछि तो आधा रिस्पांसिबिलिटी आर मध्ये गल्ला को एक्सटेंसिव माने साइमल्टेनियस विद द liability or the obligations of the principal debtor बुझिला ता सहित आगा माने ये जो पोजीशन रहछि से पोजीशन रा का रहइबो that person is known as a surety बुझा पड़ला very important question बहुत थरे पचारिबो इन क्वेश्चन जगह then agency by ratification is valid even if agency by ratification is valid even if ratification माने कौन
व्हाट इज रैटिफिकेशन कुह जल्दी व्हाट इज रैटिफिकेशन आ खोजुनी था देख एजेंसी बाय रैटिफिकेशन माने कौन हाँ केते कष्ट खोजिल कुह एबे कौन अथॉरिटी नथिबो सेटा तो लिखा हिचे सेडी तापरे कौन करियो बिहाफ रे एक्ट करियो एजेंट माने तार काम सेडा हाँ तापरे एति एके क्वेश्चन ता जति अछि कहि देला आउ कहि परुन माने गुटे जिंस गुटे एजेंट जे भी अछि से गुटे काम करला किछि गुड्स किनला किछि गुड्स का बिकिला किछि गुड्स ट्रांसफर करला कि किछि डिस्पोज करला जो जिंसडा प्रिंसिपल पर एक्सेप्ट करला माने सेतळगु एजेंट को किछि भी अथॉरिटी दिया हेनी से गोटे जिंस किंबा एक्टिविटी करला करला पर जेतळगु आफ्टर दैट एक्टिविटी हैज बीन फिनिश्ड प्रिंसिपल सेडा को जदी एक्सेप्ट करला दैट इज नोन एज रैटिफिकेशन accepting a particular type of performance after it has been performed by the agent when he has no authority to do such things जदि accept करिवोनी सेटा ratification आगा नाही so agency by ratification is valid even if the agent had no authority at the time of act a person who finds goods and retains them becomes a माने एडा को बिसरे कोच फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कार गोटे हजे थिया जिंस जदि आ पाखरे रहला ही इज अ बेली सेक्शन 2F डिफाइन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सेक्शन 2C डिफाइन्स प्रपोजल सेक्शन 65 डील्स विथ obligation of person who has received advantage under void agreement section 70 deals with non gratuitous act what is a non gratuitous act माने एक्टिविटी व्हिच हैज बीन परफॉर्म्ड विदाउट एनी ग्रेटिट्यूड माने मैं खुसरे कर देनी मैं पैसा पे करछे एक्टिविटी दैट इज अ नॉन ग्रेटिट्यूडस एक्ट ग्रेटिट्यूडस एक्ट माने ग्रेटिट्यूड रे से करछ मनरा ताकु से केबे ओडे जॉब दे दिला केबे ओडे हेल्प कर देथिला किमा केबे ओडे कोन किछ ओडे सर्विस प्रोवाइड कर देला तो कोन एबे से गोटे एक्टिविटी करछ जोडा कि ग्रेटिट्यूड रे करछ पैसा से किछ एक्सपेक्ट करनी दैट इज अ ग्रेटिट्यूडस एक्ट सेक्शन 72 डील्स विथ पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन तो कोडे कोडे प्रोबेबली आसी पारे एग्जाम रे सेक्शन नंबर से जा मु दे देची सेक्शन 74 डील्स विथ कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच और लिक्विडेटेड डैमेजेस सेक्शन 31 डील्स विथ contingent contracts what are contingent contracts the contracts which depend upon the happening or non happening of a certain event तो जदि से एक्टिविटी इम्पॉसिबल हे होची कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हबनी जदि से एक्टिविटी हैपन होची देन ओनली से पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हबो तो एग्जांपल कोन जदि गुटे शिप रे पर्ल्स अराइव होची तो शिप रे पर्ल्स अराइव हेले आई विल सेल यू द पर्ल्स दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द अराइवल और non arrival of the ship clear section 32 deals with contingent contract where event becomes impossible section 18 deals with section 19 deals with voidability of agreements without free consent an agreement between spouses for mutual support is से कहियो हां सप्ताह रे 3 दिन मु रांधी 4 दिन 3 दिन मु रांधी 3 दिन तू रांधु गुड दिन हम बाहर खाइबा एग्रीमेंट करिया हैला तो एडा कोन एनफोर्सेबल बाय लॉ की it is not enforceable by law and these type of agreements are called what domestic agreements ताको कोन बोलछन domestic agreements the burden of proving absence of undue influence lies on burden of proving absence of undue influence lies on माने undue influence ता हेची कि नाही सेडा के प्रूव करि परिबो the party in whose favor the contract was made the party in whose favor the contract was made माने देखो undue influence ता ऊपर जदी हेची सेडा हेची ना ने के कोइ परिबो undue influence रो कांसेप्ट मन अछि त
गोटे परसेंट डोमिनेंट पोजिशन रे थिबो आ गोटे परसेंट कोन ता अंडर रे थिबो ताकू से कोन करथियो जोर जबरदस्ती डोमिनेंट पोजिशन रे ता अथॉरिटी को मिसयूज करिके किछि गोटे कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर करैथियो तो आ ऊपर जोर जबरदस्ती हेच ना नै के कहिबो जा ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन हेच सॉरी जा ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हेची कहि के हम गोटे ये पड़ला ऑब्लिगेशन पड़ला से लोक का प्रूफ करबो ना ता पाखरे आगा बर्डन ऑफ प्रूफ ता अछि हैला ना नै The transfer of contractual rights to a third party without consent is called assignment. Consent न थाई कि जतळ को किछि contractual rights टा transfer हे होछि third party को this is known as assignment. ठीक है important. हला adequacy of consideration is irrelevant if lawful and sufficient. Lawful or sufficient थिले adequacy of consideration टा irrelevant. हला बुझिला ना नहीं A quasi contract is not a real contract but an obligation imposed by law. Quasi contract is not a real contract but an obligation imposed by law. Tapre Indian Contract Act originally had 266 sections. The act came into force on सेटा केम इनटू फोर्स ना कौन थिला सेटा एस्टैब्लिश हेथिबो सेटा देखि दबा टिके केम इनटू फोर्स ऑन बेस देखो मारी देखो एबे एडा हेले काली वाला गोटे हेथिबो एडा एक्ट को माने स्टार्ट केबे हेथिबो केम इनटू फोर्स केबे हेथिबो कहि आ फर्स्ट रे एडा कोन फर्स्ट सेप्टेम्बर ना ठीक अछि द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर तो सेडा कोन एस्टैब्लिश की कोन ओडा हेतिबो द एक्ट अप्लाइज टू ओके कौन कहले a contract of insurance is covered under the Indian Contract Act cover हेछि की false the doctrine of substantial performances तो गोटे टाइप ऑफ माने ये हला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे नाही तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन टा खाली टिके मन रखिया पे सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस अली कोले डोमिनेंट पोजीशन डागु बुझेबा पे माने एक्चुअल डोमिनेंस कोन नाही डोमिनेंस रे केते केते दूर कार अथॉरिटी रहउची से सब जिंस दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कांसेप्ट द सेक्शन डीलिंग विथ व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी सेक्शन 190 तापर कंटिन्यूइंग गारंटी रो सेक्शन होची सेक्शन 129 section कौन कहले section 69 provides that a person who pays money which another is legally bound to pay is entitled to reimbursement माने reimbursement रो section number होची section 69 रे हैला section 21 deals with mistake of law which of the following is not a ground for discharge of contract discharge of contract में कोई breach performance impossibility of performance etc so it is none of the above the remedy of quantum merit is available when contract is partly performed and becomes void quantum merit माने as much as one deserves मन अछि ना नहीं as much as one deserves तो partially perform हेथिले आगा कोन हबो आ जने कोन जेतिकी से परफॉर्मेंस करिछि सेतिकी पैसा से डिजर्व करछि तापर सेटा void हे जिवो A contract of guarantee without consideration is सेटा केन contract हबो कि फर्स्ट रे नथिले तो हबो no consideration no contract
तार एक्सेप्शंस अछि an agreement to marry is personal nature, no legal obligation, legal intention create करला वाला जिनस किछ नहीं. A contract entered into by coercion is voidable by the coerced party. And the last question is section 44 of the Indian Contract Act deals with a discharge of surety when principal debtor is released. Hela kichi doubts achi? This is the end of Indian Contract Act, and the questions we have discussed are your examination questions, and most probably a questions bhitru aga tamara questions pachariya. Most of the questions will be asked from this aspect or are related jinsa को. जदि तमे बहुत भल से प्रिपेयर करिया चाहछो एजेंसी कंसीडरेशन ऑफर मिस्टेक फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन रो एलिमेंट्स से जिनस रो जेहेतु क्वेश्चंस पचाछि सेडा देखिबो. आ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर रे कोन कोन आछि, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर रे कोन कोन आछि, ऑफर टाइप्स कोन से जिनस ऊपर टिके ध्यान दबो. ओके, सिंस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी लेंदी तो टिके ए पर्टिकुलर जिनस ऊपर टिके ध्यान दबो. जदि टाइम परमिट करछि देन यू कैन गो विथ द रिमेनिंग थिंग्स. ठीक अछि, थैंक यू सो मच.